Endoplasmic reticulum. It is the largest organelle in most eukaryotic cells that responsible for many cellular functions. Learning outcomes. Today we will discuss about introduction, forms and function of endoplasm reticulum. Let's start with introduction. Network of channels within a cell. It is basically a sac-like or tube-like structure that extend from the nuclear membrane toward the cell membrane. The outermost boundary of cell is known as a cell membrane in animal cell. You can see over there. This part is known as a nucleus, and the outermost boundary of a nucleus is known as a nuclear membrane. So it is basically extend from the nuclear membrane toward the cell membrane. What is cisternae? It is a 2 marks question again. Each channel is a sac or tube-like structure. This is a sac or tube-like structure. You can see over there. These are tube-like structures or sac-like structures. These are known as cisternae and filled with the ER material. ER stand for endoplasmic reticulum. What is a ER material? Just for knowledge, it is a luminal content of endoplasm reticulum, which includes newly synthesized protein in case of rough endoplasm reticulum and lipids in case of smooth endoplasm reticulum. Next, we will discuss about the forms of endoplasm reticulum. There are 2 forms of endoplasm reticulum. Number 1, a rough endoplasm reticulum, and number 2, smooth endoplasm reticulum. These 2 forms are on the basis of presence or absence of ribosomes. If ribosomes are absent, known as smooth endoplasm reticulum. If ribosomes are present, it is known as a rough endoplasm reticulum. The ER with a granular surface. If endoplasm reticulum with a granular surface or spots or granules, or these are known as a ribosomes. These spots you can see over there. If we extract out the structure of rough endoplasm reticulum, you can see over there the granules are present on the surface of endoplasm reticulum. These granules are known as ribosomes. They play a very important role in the synthesis of protein. Protein either store or export out from the cell. Stored protein, newly synthesized protein that is stored inside the cell, acting as an enzyme to catalyze the chemical reactions or providing the structural support. The transporting molecules across the membrane, the protein molecules, help in the signaling between the cells or participate in the cellular processes like growth, repair and defensive system. Next, we will discuss about the other form of endoplasm reticulum, that is known as SER. Capital letter में इसको लिखना है, smooth endoplasm reticulum. Smooth endoplasm reticulum have no granular surface. आप इसको नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे कोई भी ग्रैन्यूल और स्पोर्ट्स इस सरफेस पे नहीं है. इफ़ नो नॉन ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर एंड राइबोसोम्स आर एब्सेंट, इट इज़ नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम. मैं अक्सर स्टूडेंट को एग्जांपल देती हूँ, जैसे स्किन बहुत स्मूथ होती है जिस पे एक्नी ना हो. इफ़ एक्नी इज़ प्रेजेंट आप उसको रफ बोलोगे. इफ़ एक्नी इज़ नॉट प्रेजेंट आप इसको स्मूथ बोलोगे. दैट एक्नी इज़ नोन एज अ राइबोसोम. फंक्शंस ऑफ SER. स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के फंक्शंस क्या हैं? हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस सच एज द लिपिड्स. And you know that lipid is a part of your plasma membrane. Your plasma membrane is made up of phospholipids. That lipids export out from the cell to become the part of that plasma membrane. And also help in the detoxification of toxic substances that are present in the cytoplasm. उस टॉक्सिक सब्सटेंसेस को किल करने के लिए समटाइम हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लें या कोई फूड में हमारे पास टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी में चला जाए, उस केमिकल को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को किल करने के लिए यहाँ पे SER वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसको डिटॉक्सिफाई करता है, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं इसमें, और इसको पैकेजिंग करके सेल से एक्सपोर्ट आउट करता है. ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस like nerve impulses and cell signaling molecules may be SER a role play कर रहा है. Transportation of material from the one place to another place. You know, smooth endoplasm reticulum have no ribosomes, so they play a very important role in the packaging of material
जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है आपकी रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में, वो फर्दर आगे ट्रांसपोर्ट हो रही है टूवर्ड द स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और फर्दर उसकी पैकेजिंग होने के बाद वो सेल से एक्सपोर्ट आउट होने में हेल्प आउट कर रही है. And number 5, provide mechanical support to the cell. You know that smooth endoplasm reticulum and rough endoplasm reticulum are basically extend from the nuclear membrane toward the plasma membrane. तो इतना एरिया ये कवर करते हैं. लार्जेस्ट ऑर्गेनेले भी हैं मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में. तो पूरे सेल में साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड आउट होने की वजह से ये सेल के अंदर एक शेप मेंटेन करने में भी हेल्प आउट कर रहे हैं. सेकेंडली, लिपिड्स की जो सिंथेसिस हो रही है, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में, वो भी एक स्ट्रक्चरल पार्ट बन रहा है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे पास ER के ऊपर, दैट इज एंडोप्लाज्म रेटिकुलम.